Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apologies for the delay. We had some technical difficulties, but now we will continue where we left off yesterday. So I will do a tilawat of the verses that I will explain, and then inshallah, we'll talk about them. So Surah Al-Baqarah verses 173 and 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. O ye who believe, eat of the good things we have provided for you, and render thanks to Allah, if it is He whom you worship. He has made unlawful to you only that which dies of itself, and blood, and the flesh of swine, and that on which the name of any other than Allah, has been invoked. But he who is driven by necessity, being neither disobedient nor exceeding the limit, it shall be no sin for him. Surely Allah is most forgiving, merciful. Donc, la traduction française des versets que j'ai lus, sur le Al-Baqarah, versets 173 et 174. Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses que nous vous avons accordées comme provision et soyez reconnaissant à Allah si c'est lui que vous adorez. Il ne vous a interdit que ceux qui meurent de mort naturelle et le sang et la chair de porc et tous ceux sur lesquels un nom autre que celui d'Allah a été invoqué. Mais pour celui qui y sera contraint par la nécessité, n'étant pas désobéissant et ne dépassant pas les limites, ce ne sera pas un péché. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. तो अब इन आयत का उर्दू तर्जुमा भी मैं पढ़ लेता हूँ. तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल-बकरा में फरमाता है, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जो रिज्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो. उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और वो हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो. अलबत्ता उस पर कोई गुनाह नहीं जो भूख से सख्त मजबूर कर दिया गया, ना हिर्स रखने वाला हो और ना हद से तजावुज करने वाला हो. यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है. So these verses are actually very relevant and very important. In the last yesterday, I explained how Allah says we should eat what is halal and tayyib. So if we read the commentary of these verses, it is explained that there are certain things which are unlawful, which are mentioned here. The four things: dead animals, blood, pig, and that which has been sacrificed for something other than Allah. But when we read in the ahadith, there are also other things that are forbidden. So there are two categories. There are things that are unlawful, haram, and there are things that are forbidden, which are known as mamnu, or also known as makruh. And makruh, things that are makruh, people will often ask a question about makruh. When it comes to things that are makruh, it does not necessarily have to be the same rule that applies to everybody. So in certain cultures, in certain traditions, people may eat certain foods that are halal, but they are not pleasant to other people. So things like this will fall under makruh. In this verse, Allah says, and this is important for us because as we are fasting, and when we fast, we don't eat, and it is a time for us to reflect on what we have. Allah says,
Ushkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, that be thankful to Allah if it is He indeed that you worship. So during these days of Ramadan, of fasting, when we are not eating, when we are hungry and thirsty, we should be thankful to Allah for everything that we have, for all the food that we have, for the fact that most of us, by the grace of Allah, we don't have to wait for meal. We can eat whenever we want to, and we don't have that uncertainty of knowing whether we're going to eat or not. When in a lot of the world, in many parts of the world, people don't have that luxury. So we should, during the days of fasting, we should pay extra attention to this. Allah says in the Holy Quran in chapter 14, Surah Ibrahim, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, that if you are grateful, if you are thankful, then I will increase my blessings upon you. So during this month of Ramadan, we should offer extra reflection on what we have and be thankful. And this is also why Allah says this right after talking about food. Allah says, eat of the good things and be thankful to me, because it is Allah's blessing upon us that we are in a situation that we are comfortable and we have food to eat whenever we want. Donc, dans ce verset 173, Allah, il parle du fait qu'on devrait manger les choses qui sont halal et qui sont pures, qui sont tayyib. Excuse-moi, ça c'était le verset que j'ai lu hier. Aujourd'hui, Allah, dans ce verset, il dit de manger des bonnes choses qu'il nous a données. Ensuite, il dit d'être reconnaissant. Donc, pendant le mois de Ramadan, pendant les journées qu'on mange pas, qu'on boit pas, c'est une excellente occasion pour nous à faire la réflexion et à être plus reconnaissant pour toutes les choses qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas la certainté qu'ils vont avoir un autre plat à manger, qu'ils vont manger demain. Mais nous, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on a la nourriture disponible chaque jour, chaque heure, et on peut manger quand on veut. Donc, pendant les journées qu'on ne mange pas, on devrait penser aux gens qui sont plus pauvres, et puis on devrait être plus reconnaissant et chercher l'amour, la proximité de Dieu, d'Allah. Dans chapitre 14, Allah, dans notre verset, il dit que si vous êtes reconnaissant, je vais augmenter mes bénédictions sur vous. Donc ça, c'est juste une chose que pendant le jeûne, on devrait réfléchir sur ceci. तो इस पहली आयत में कल हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि हम हलाल और तैयब खाना खाएं. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उस खाने में से खाएं जो उसने हमें दिया है, और आखिर में कहता है कि तुम फिर अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर वाकई में तुम उसकी इबादत करते हो. तो इन दिनों में, रमज़ान के जो दिन हैं, जब हम रोज़े रखते हैं, जब हमें भूख लगती है और प्यास लगती है, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सर्टेनिटी नहीं है कि उन्होंने कल खाना खाना है, या कि अगर उनके पास खाने के लिए कुछ मौजूद है. लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अक्सरियत जो है यहाँ पे, हमें ये पता है कि अगर हमने अभी खाना है हम खा सकते हैं, अगर बाद में खाना है बाद में भी खा सकते हैं, अगर कल खाना है कल भी खा सकते हैं. तो ये हमारे लिए खाना खाना एक मसला या कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हम कब अगली दफ़ा खाना खाएंगे. तो जब हम भूखे रहते हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए और फिर हमें ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसके फजल से है. और अल्लाह ताला सूरत इब्राहीम में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करो तो मैं फिर तुम्हें ज़्यादा दूंगा. तो इन दिनों में हमें इस बात की तरफ भी ख़ास तवज्जो दानी चाहिए, और जब हम रोज़ा रख रहे हैं हमें अल्लाह ताला का ज़्यादा शुक्र करना चाहिए ताकि हम उसके नतीजे में ज़्यादा हमें अल्लाह ताला का फजल भी मिले. Then in the next verse, which I briefly touched upon, Allah mentions the four things that we cannot eat. And like I said before, that there are different categories. And if we read in a hadith, then we can further read the things that the Holy Prophet ﷺ has also told us not to eat. For example, there's just one example, that animals with claws,
we should not eat those animals. But there are detailed hadiths about this. But one thing that I want to mention about this verse, and this was being discussed recently as well, is that people ask certain questions. So, for example, Allah says that we cannot eat dead animals. And in Surah Al-Ma'idah, if we read in the first ruku of Surah Al-Ma'idah, Allah further explains this verse, that He says that we cannot eat animals that have been killed by a fall, or crushed to death, or strangled to death, or gored to death. So these are explained in Surah Al-Ma'idah, if we want to read more about that, in the first ruku of Surah Al-Ma'idah. But there are always exceptions to every rule. And even in this verse at the end, Allah says that a person who is stricken with hunger and he has no choice, or she has no choice, they can eat these four things if it is a choice between life and death. So Hazrat Masih the Prophet Islam, has said that Islam is not a religion that focuses on hardship. And so there are always exceptions. And a person who by necessity needs to eat this, then he may eat this food. Another question that people will ask is that if a person is hunting and he hunts an animal and kills that animal, and that animal dies before he's able to slaughter the neck, is that animal allowed to eat or no? So we should always try to find references from a hadith to further understand. So the Holy Prophet ﷺ said that a person who shoots an arrow at an animal and later he finds the animal dead, that animal is lawful to eat as long as the flesh is not rotting. So that means that, of course, if it's been a few days and he finds that animal and there's bugs in it, all that, then he should not eat it. But the Holy Prophet said, if that animal is killed by the arrow, he can still eat that animal. And the Holy Prophet said the same thing for people back in those days, and even today, some people have the habit of hunting with dogs. So the Holy Prophet said that if your dog takes the animal and kills it, that animal is still lawful for you to eat. And the Holy Quran has also mentioned this point about the hunting dogs as well in Surah Al-Ma'idah. Then the second question people will say is that, can we eat something on which the name of Allah has not been pronounced? Because this verse says that Allah's name has to be pronounced on this on the animal. And this is a big debate among many schools of Islam, whether we can eat, for example, McDonald's, Burger King, and all this. Our Jamaat's perspective on this is that the condition is that your meat cannot be mixed with pork. So if there is something that's being cooked on the same grill, if the utensils and the storage is being mixed, then your meat has been mixed with pork, then that is not able to eat. But if it is being cooked simply by a non-Muslim, we are able to eat that food. And what's important about this is that if we read the words وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, it does not say that something that's on which Allah's name has not been pronounced. It says something on which something other than Allah's name has been pronounced. That we cannot eat. So, for example, some people have the practice of slaughtering an animal in the name of a different god. For example, the Hindus or the Christians may slaughter an animal in the name of one of their gods or of Jesus alayhi salam. That meat cannot be eaten. But it does not say that we cannot eat an animal. An animal that Allah's name has not been pronounced on. In Surah Al-Araf, Allah says, do not eat that which you have not pronounced Allah's name on. So when we eat the meat, we ourselves can pronounce Allah's name on it. And so that becomes lawful for us to eat. So this is an important point to note, that this verse does not say that we cannot eat the food that it does not have Allah's name. It says we cannot eat that food that something other than Allah's name has been pronounced. There's also a hadith, a very famous hadith of the Holy Prophet ﷺ, that the Sahaba came to him and they said that we have received some food from people and we don't know whether Allah's name has been pronounced on this. And so the Holy Prophet ﷺ said, Sammu wa kulu, that pronounce Allah's name, say Bismillah, and eat. So the Holy Prophet ﷺ has explained this for us.
Hazur in his khutbah a few weeks ago had also mentioned a similar incident in the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq also, that the same thing happened, and he allowed the Muslims to eat that meat. So we should remember that that the main thing is that our food should not be mixed with pork. Other than that, we can eat that meat. And then just one more point about the word khinzir. People ask also about pig. So in the philosophy of the teaching of Islam, the Promised Messiah Islam has said that the word khinzir is made up of two words, khans and ara, which means I see it very foul, or I see it very bad, evil. So Hazur says that the name itself, khinzir, shows that it is not a good animal. So this is one of the reasons why that just the pig by itself is not a good animal. Often people will ask that, today farming has changed, and why can't we eat meat, pig? But even today, the pig is still associated with filth and dirt. So for example, there's a common expression that if we see something dirty or a person who is dirty, that person or that thing will be called a pig. Or a common expression in English is that I'm living in a pigsty, which means that if we're in an area that is not clean, we compare that to a pig. So this just shows that the pig in itself has been associated with things that are not clean and good. So so by itself, by like in its nature, the pig is known as an animal that is not clean. I just want to make sure, we only have a couple of minutes left. I just want to make sure that I'm not missing anything, because this is an important topic. So I'm just going to read through my notes quickly. Just one more thing, people will also ask, sometimes people will ask a question that whether we can use even the dishes of non-Muslims, because people will say that, sometimes they may cook their food with pork and alcohol. Can we use those dishes? So this same question was asked to the Holy Prophet ﷺ. The Sahaba said that we live with Christians and Jews and Zoroastrians. Are we allowed to use their dishes? So the Holy Prophet ﷺ said to clean them and use them. So this is also just something important for us to know, because some people may be more rigid and they may say that we have to have our own dishes and we cannot share. But as long as the dish is clean, we may use that. बस जल्दी से मैं इफ्तारी भी होने वाली है. मैंने बस ये कहना था कि इस आयत में, ये बहुत ज़रूरी आयत इस लिहाज से है क्योंकि इसमें खाने के मतलब हमें बहुत सी हदायत दी गई हैं. और इसमें एक ये बात है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि या बाज़ लोग कहते हैं, ख़ासतौर पर जो गैर अहमदी हैं, वो कहते हैं कि अगर एक खाने पे अल्लाह का नाम ना लिया हो उसको हम नहीं खा सकते. तो इस आयत में अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि हम उस चीज़ को नहीं खा सकते जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया हो. तो बाज़ जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं वो भी अपने जो बुतफर हैं, अपने खुदा हैं, उनके नाम पे कुर्बानी करते हैं, उसको हमें नहीं खाना चाहिए. लेकिन जो जमात का नज़रिया है, हज़रत मसीह ने भी इसके मतलब हिदायत दी है. असल बात यह है कि हमारा जो खाना है, जो गोश्त है, वो सूअर के साथ मिक्स ना हो. तो अगर वो खाना अलग है, जब हम उसको खाएं, हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं. ये वाक़या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ था. सहाबा ने आपसे कहा था कि बाज़ ऐसे लोग हैं, हमें नहीं पता अगर वो अल्लाह ताला का नाम खाने से पहले लेते हैं. तो हुजूर ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि अल्लाह का नाम लो और उसको खा लो. फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत के मतलब ये भी फरमाया है कि जो इस्लाम की बुनियाद है वो आसानी पे है और मुश्किल पे नहीं है. तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि हम मुश्किल पे हों. तो ये कवानीन हैं ऐसे, लेकिन इनमें भी बाज़ एक्सेप्शंस हैं. तो बाज़ लोग ऐसे मसले पूछते हैं कि जो लोग शिकार करते हैं, पूछते हैं कि अगर हम खुद अपनी बंदूक से जानवरों को मार लें, हम इसको खा सकते हैं या नहीं. तो ये सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी ने पूछा था. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर एक बंदा एक तीर के साथ शिकार करे और उसका जानवर तीर उसको लग के वो चला जाए वहां से, और अगर वो मर जाए खुद, तो वो गोश्त फिर भी खा सकते हैं अगर वो खराब ना हो जाए. तो अगर उसमें उल्ली वगैरह हो, कीड़े हों, उसको नहीं खाना चाहिए. लेकिन अगर जानवर खुद
मर जाए तो फिर भी हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि हमने ही उसको अपनी बंदूक या तीर कमान या जो भी हो उसके साथ हमने मारा था। तो ये हदीस में आए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो लोग कुत्तों के साथ शिकार करते हैं, अगर उनके कुत्ते भी चीज को मार दें, वो भी हमारे लिए खाना जायज है। तो इसकी मतलब इंशाल्लाह कल अब बात करेंगे। 2 मिनट में इफ्तारी हो रही है, donc juste vite parce qu'il y a juste 1 minute qui reste maintenant. La chose principale est qu'on ne peut pas manger les choses que les autres dieux, qui étaient sacrifiés pour les autres dieux. Mais le Saint Prophète, il y a des hadiths qui disent que les gens ont dit qu'on ne sait pas si les autres musulmans ou les autres gens ont sacrifié la viande pour Allah. Donc le prophète a dit qu'avant de manger, dites le nom de Dieu, d'Allah, et mangez-le. Donc les choses, le principe est qu'on ne devrait pas mélanger notre viande avec le porc, sinon on peut manger les choses des non-musulmans. Et le prophète a dit aussi que quand on fait la chasse, si on tue un animal, on peut le manger aussi, tant que ça ne soit pas pourri. So again, à la fin, I just apologize for the short dust. We had some technical difficulties, but inshallah, we will start again tomorrow from 6:45. So we will continue tomorrow. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.